અરહં सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि नमो धम्माय। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि नमो संघं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदुम् अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मं सन्दिठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो युतो हेति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाखी। साधु साधु सात बुद्धों की वंदना। विपाशीस नमस्तुं चक्षुमत श्रीमतो शिखिपास नमस्तुं सर्वभूतानुकम्पिनो वेशभूष नमस्तु नहातकस तपस्विनो नमस्तु ककुशान्धस मारसेनापमदिनो कोण गमनस्य नमस्तु ब्राह्मणस्य उशीमतो कश्यपस्य नमस्तु विपुमुतस्य सबधि अंगिरसस्य नमस्तु शक्यपूतस्य श्रीमतो यो इमं धम्मं देशेसि सर्वदुःखापनं
नन्दनं ये चापि निवृत्ता लोके यथा भूतां विपश्यिषु ते जना अपि न शुना महन्ता वीतशारदा इदं देवमनुष्यानं यन्नमस्सति गौतमं वीजाचरणसम्पन्नं महन्तं वीतशारदं वीजाचरणसम्पन्नं बुद्धं वन्दामि गौतमन्ति। वज्रासन वंदन। वज्रसंघात शरीरो वज्रयाणा नमः करो यो बुद्ध बुद्धिमलम्मे निशीनो वज्रासने ससेन मारजित्वानं सत्तपुंरस्तेजसं पठमे पुबे निवासं मज्जिमे दिव्यचक्षुकं पाचिमे सभसंखारे समथलखकोटिं सतिसायकोटि शतसमुखेन पच्यम् उत्तरमहावज्रेण सुषुम्धाशङ्खं बुद्धभूमिनितङ्गो सोमहावज्रासना बोधनेयो सुबोधयित्वा बोधिसिन्तनु प्रथमं बोधिपालङ्कं द्वितीयंपि अनिमिषं तृतीयंपि च कमलशेषं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमम् अजपालं च मुचलिन्देन षष्ठमं शतमं राजायतं वन्दे तं मुनिसेवितं महादयो महासतो बोधिमूले निशिन्नि पञ्चमारे पराजेत्वा मोतिसम्बोधिमुत्तमम्। त्रिभिच्यत्यवन्न वन्दामि चेतियं सबं सर्वठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निशिन्नोव सबारी विजयम् अका पतो सभयुतं सत्थ वन्दे तं बोधिपादकम्। इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। अरत्वकीय वंदन। यो धम्मसेनापति सुपूजितो पय्याय पारमिङ्गतुं गम्भीरपय्यो मेघावी मग्गमग्गसकोविदुं तं वीतरागं सुषुमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभृतसारिपुत्रं यो महानुभावो छलभीयो हृद्या पारमिङ्गतु सो विकुबना सुकुशलो वशीभूतो महिन्द्रिया तं वीतरागं सुषुमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभृतमङ्गलायन् यो दायादबुद्धसेठस विशितो धुतगुणे मुनि उपसन्तो उपरतो पत्तसेनासनो विदु तं वीतरागं सुषुमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभृतमहाकश्यपम् यो चित्तकाथिदामधरो सतिमतो गतिधितिमतो सुगतासको सारखो पूजनीयो च बहुसुतो
तं वीतरागं सुषुमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिभूतनानन्दथीरम् यो च पूर्वे पमं जित्वा अङ्गुलिमालोति विशुसुतो अपमादं समादाय विततनो सुषुभुतो तं कारुणिकं सुषुमाहितेन्द्रियं वन्दामि परिनिभृत अङ्गुलिमालम् यो सार्थकपो कल्याणमितो महायानी जिनन्तजो सोलङ्कादीपमागं ज्योतियबुधशासनं तं वीतरागं लङ्कादीपसाधकं वन्दामि परिनिभृतमहामहिन्दम् साधु साधु साधु। महापरित्राण शान्तिचिकवालेषु अत्रागसन्तु देवता सदां मुनिराजस शृणोतु सगमुखं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः परित्यजं श्रवणकालो अयं भदन्। करणीयमेषु करणीयमतकुशलेन यान्तं सन्दन् अभिमचेय सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदु अनतिमानि सन्तुषको च शुभरो च अपकीचो शालौकऊति शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगीधो न चरं खुदं समाचरे किञ्चि येन वियुपरे उपवदेयुः सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितः एते चिपाणभूताति तसावाथावराव अनवशेषं दीदा वा ये महन्ता वा माजिमार्षकानुकथूलम् दीठा वा एव अदीठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सर्वे सन्ता भवन्तु सुखितः न परो परं निकुबेथ नातिमय्येथ कञ्चन कैयम् व्यारोसना पटिगसंज्ञा नाम शय्य दुःखमीचीय माता यथा नियङ्पूतन् आयुषा एकपूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसंभावै अपरिमाणम् मेतं सबसलोकस्मि मानसंभावै अपरिमाणम् उद्दग्धो च तिर्यं च असबाधं अवीर असपन्तं तीर्थं चरन् निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिदुम् एतं ततिन् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहार इदमाहुम् दीठां च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगीतं न हि जातु गवसे पुनरेति। 25मुं पाठ।
अविद्यापचया संखारा संखारपचया विद्या विज्ञानपचया नामरूपपचया षडायतनु षडायतनपचया फस्सो फस्सपचया वेदना वेदनापचया तणहा तणहापचया उपादम् उपादानपचया भवो भवपचया जातिम् जातिपचया जरामरणम् शोकपरिदेव दुःखदोम पायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति अविद्यावतवेश अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा षडायतन निरोधो षडायतन निरोधा फस्स निरोधो फस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तणहा निरोधो तणहा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरण शोक परिधि व दुःख दो मनुष्पायासा निरुजन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति अनेक जाति संसारं संधाविषं अनिविषं गहकारं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनं पुनं गहकारं दिठोषि पुनगेहं न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकुटं विशंखतं विशंखारं चित्तं तणखं जागति रतन यानि भूतानि समागतानि हुम्मानि वायाव अनन्तलिखे सभेव भूता सुम्ना भवन्तु अथोऽपि शक शृणुतु भाषितं तस्मा हि भूता निशमेत सभ्ये मेतं करोत मनुष्यापजाय दिवाचरतो च हरति बल्ली तस्मा हि निरखन अपमत्ता यङ्कीचिद्वा इदङ्वा हुरङ्वा सज्ञेषु वायं रत्नं पणितं ननु समाथि तथा गतेन इदं बुद्धे रत्नं पणितम् एते न सच्चेन स्वाथि होतु खयं विरागं अमतं पणितम् अजज्ञशक्य मुनिसमहि न ते न धम्मेन समन्ति किञ्चि इदं मे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वाथि होतु यभूतसेतो पणिवै शुचि समाधिना किन्ति इमाहु समाधिना तेन सर्वं विजन्ति इदं मे रत्नं पणितम्
एतेन सच्चेन स्वति होतु। ये पुगलाठशतं पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। देदाखणीया सुगता सशाका अत्तेषु दिनानि महाफलानि। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। येषु पयुता मनसादलेन निक्कामिनो गौतमशासनम्। ते पातिपत्ता अन्तं विगायं लब्धा मुदानि बुद्धिभुजमाना। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। यत्खिलोपाठविषितोषिया चतो विवाते असङ्कल्पीयो तथोपमं स पुरुषं वदामि यो अरिय सच्चानि अविपसन्ति। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। ये सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपयेन सुदेशितानि। किञ्चापितेहोति भूपासमत्ता न केवलम् आठमम् आदियन्ति। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। सः वसदसन सम्पदाय तया सुधम्मा जयता भवन्ति। सक्काय दीठि विकीचिता च शिल्बातवापि यथिन्थि कीचि। चतुपायी च विपासमुतो चत्ता विनानानि अभन्तो कातुम्। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। किञ्चापिशुकमं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा। अभ्यस्वता च पटे च दाय अबातदिठ सेवूता। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। वनगुम्मे यथा भूषितगे गिमहानमासे पठास्मि गिम्हे। धातुपमन्धं वारम् अदेशै निब्बाणगामी परमं हिताय। इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। वरो वरयो वरदो वरारो अन्तरोधं वरम् अदेशै। इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। क्षीणं पुराणं नवनाथि सम्भव विराकचित्ता अकृते भवस्मि। ते क्षीणबीजा अयुधिझन्दा निबन्ति धीरा यथयं प्रदीपो। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन स्वति होतु। यानि इदभूतानि समागतानि पुम्मानि वायाव अनन्तलिखे। तथागतगदेव मनोस पूजितं बुधं नमस्सामि स्वति होतु। यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वायाव अनन्तलिखे। तथागतगदेव मनोस पूजितं धम्मं नमस्सामि स्वति होतु। यानि भूतानि समागतानि
पुम्मानि वायाव अनन्तलिखे तथा गतगदेव मनुष्यपूजितं संघं नमस्सामि स्वातिहोतु एतेन सचेन स्वातिहोतु एतेन सचेन स्वातिहोतु एतेन सचेन पुण्यं घटिकारो ब्रह्मराजा इमं पुण्यानुमोदतु सक्को न देवमिन्दो इमं पुण्यानुमोदतु वेशकामो देवपूतो इमं पुण्यानुमोदतु तावसीकायिका देवा इमं पुण्यानुमोदतु पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् उल्मं धिटघटरक्षो दक्षिणेन विरुलखो पश्चिमेन विरूपक्षो कुबेरो उत्तरदिशं चत्वारो ते महाराजा इमं पुण्यानुमोदतु पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् इन्दो सोमो वरुणो च भारद्वाजो प्रजापति चन्दनो कामसेण्ठो च किंधुन्धरं निरुन्द च पमादो ओपमयो च देवसुतो च मालती चित्तसेनो च गन्धर्वो नलो राजा जनेशभो सातागिरो हेमवतो पुण्यको कर्तियो गुलो शिवको च मुचलिन्दो च वेशामितो युगन्धरो गोपालो सुभगेदो च हिरितेनि च मन्दियो पञ्चङ्करो आलवको पजनो सुमनो सुखनो दधिमुखो मणिमाणि चरो दिधो अथो शेरीशकोशः अते सेनापति देवा इमं पुण्यानुमोदतु पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आलवको देवराजा इमं पुण्यानुमोदतु महाकालो नागराजा इमं पुण्यानुमोदतु पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाचटा च भूमट्टा देवानागा महीदिका पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाचटा च भूमट्टा देवानागा महीदिका पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम् आकाचटा च भूमट्टा देवानागा महीदिका पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशावकम् इमिना पुण्यकाम्येन मामे बालसमागमम् सकं समागमो होतु यावन्निर्वाणपत्या इदं मे पुण्य आसवक्ष्य होतु सर्वदुःखापमुञ्चतु कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयखं मे भन्ते भूरिपय्यं तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयाखं मे धम्म सन्दिठिको अकालिको कायेन वाचा चित्तेन
पमादेन मया कचं अच्चयोखम मे संघो पुयं खेतं अनुत्तरम। बोलो साधु साधु। ऑनलाइन परित्राण सूत्र पठन सुनने वाले सभी उपासक उपासिका को मंगल कामना करते हैं कि सुखी हो, मंगल हो। अषाढ़ अमावस्या के दिन वर्षावास में भिक्षु पथिक ने अमर बोधि बोध विहार गुजरात से सूत्र पठन किया। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बंद। जल्दी बंद कर यार, समझ तो नहीं कोई बात नहीं।